Joy Jazz. Subscribe and like. Welcome students, welcome to the e-learning platform, to the new session. In the last class we have just studied about the start of the restriction endonuclease. I have also discussed about what are the nucleases. Nucleus कौन से विषय में last class में बुझे थे. So nucleus कौन आउट तुमको recall कर दूँगी. Nucleus is a type of enzymes. These are just the name suggests they can digest the nucleic acid, either RNA or DNA. Nucleic acids are two types, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. So these two types of nucleic acid, RNA or DNA, they can be digested by the nuclease enzyme. So nucleases are of two types, endonuclease and exonuclease. Exonuclease, as the name suggests, exo means it is from outside, that means two ends, either this end or from that end, 5' end or from that end, 3' end. And endonuclease means they can core the DNA either in between these two ends, 5' and 3', any point in between these two. So these are two types of enzymes, exonuclease and endonuclease, but our point of concern is the restriction endonuclease, which is a type of, as the name suggests, it is a endonuclease. It can core the DNA in between the 2 points. So there is also something written here, molecular seizures. Restriction endonucleases are also called molecular seizures or chemical knives because they can cut the DNA in between. So these tools are very important in the recombinant DNA technology to carry out the genetical experiment, to recombine the genes of two different organisms. These seizures are really important and required. Let us have some history about the restriction endonuclease. Restriction endonuclease कोठु आसीची तार हिस्ट्री विषय रे तार कोठा से विषय टिके डिस्कशन करिबा. Restriction endonuclease कोठु आसीची. Restriction endonuclease specifically isolated from bacteria, prokaryotes or bacteria. So what is their work in bacteria? Bacteria भितर तांकर काम कोन? Restriction endonuclease bacteria defense system थाए. आमर जेमती immune system अच्छी, immunology आमर defense body defense system अच्छी, antibodies are there, WBC are there, which can protect our body from any type of pathogen which are attacking to our body. जो बैक्टीरिया भाइरस आम बॉडी को अटैक करे ताको जेमती आमर एंटीबॉडी मान ताको अपोज करंती बॉडी को प्रोटेक्शन दियंती. Thus in the same way restriction endonuclease, this enzyme protects the bacteria from the attack of bacteriophage. So bacteriophage, as you know, phage means it is a virus. So virus are three types. मु से विषय details तुम को कहूनी. So phage means it is a virus. Virus are three types. Those are animal virus are called zoophages, plant virus are called phytophages, and bacterial viruses are called bacteriophages. So virus गोटे प्रकार organism दाको कि Whittaker classification विषय सुनिथिबो. Whittaker ताको गोटे living kingdom भितर रखी नांती, living wall भितर रखी नांती. Virus is excluded from the living wall. Virus just lies at the borderline between living and non-living, so that it implies virus partly living and partly non-living. कौन partly living? जेते गोटे living cell भितर virus थाए, cell life like acting करे, living like active करे, तार DNA को replicate करे. Outside of the cell बाहरे तार किसी अस्तित्व नहीं, it has no identity, it can just like a dust particle in the outside of a living cell. And another thing, the three type of virus, plant virus, animal virus and bacterial virus, they are very specific to such type of cells. Plant जो virus माने plant cell को attack करने से माने animal cell को attack करने नहीं, animal virus माने bacteria को attack करने नहीं, कि bacteria रा virus माने animal बा plant को attack करने नहीं. So bacteriophage means से virus जो माने bacteria cell को attack करती, bacteria cell bacteria DNA को से माने काटी दियंती, नष्ट कर दियंती, bacteria को पूरा नष्ट कर दियंती, bacteria death कर दियंती. Okay. So से virus ठारू बैक्टेरिया निजको रक्षा करने पे प्रोटेक्शन करवा पाई बैक्टेरिया भीतर गोटे प्रकार एंजाइम अच्छी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम दैट इज कॉल्ड RMS. RMS means
रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एथरे दीटा एंजाइम अच्छी गोटे अच्छी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गोटे अच्छी मिथाइल ट्रांसफरेज सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम होची कौन ना से बैक्टीरिया जो भाइरस डीएनए जो अच्छी भाइरस डीएनए को गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे से काटिदेव लाइक सीजर जस्ट लाइक सीजर सो दिस रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस have some specific point specific target site target sequence दो target sequence को से माने कट करती सो भाइरस से टारगेट सीक्वेंस भाइरस डीएनए से टारगेट सीक्वेंस को से माने कट कर देबे वो भाइरस डीएनए को तले काटी की नष्ट कर दे भाइरस रो डेथ हो जिवो बट देयर इज ए क्वेश्चन जदि ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस they damage to the viral DNA if this restriction endonuclease can damage to the viral DNA why they cannot give harm to the bacterial DNA its host DNA the निज DNA को bacteria निज DNA को कहीं से माने काटी पारो नाहंती there is another system as I have told there is a modification system it is a restriction system another modification system it is carried out by another enzyme a methyl transferase that is another enzyme जे कि गोटे मिथाइल ग्रुप से टारगेट सीक्वेंस जोटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टारगेट सीक्वेंस तापर गोटे मिथाइल ग्रुप रखी देता है से मिथाइल ग्रुप रही जोगु दैट टारगेट सीक्वेंस को से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आउ डिटेक्ट करि पारे नाही जोति पई कि ता होस्ट रो डीएनए को से काटी पारे नाही केवल भाइरस रो डीएनए को काटे तबे आमर एठी कोन इंपोर्टेंस रहिला आम पे एटा को केमिति इंपोर्टेंट रहबो कारण ये जिते गोटे डीएनए को काटी पारुची गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे तेणु आमे जो टारगेट डीएनए आनिबा धर इन्सुलिन डीएनए को आमे आनिले सो इन्सुलिन डीएनए को आमे काटिकी आनिबा को जगह काटिबा आम तो इन्सुलिन डीएनए आखि की देखा जीव नहीं सो आमे ताको कहिंच रे काटी परिबा नहीं सो दीज एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स और द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दीज आर यूज्ड टू कट द इन्सुलिन डीएनए आर देयर बोथ एंड और देयर पर्टिकुलर पॉइंट्स से आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करछु तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड इज द BAM2 सो आम जानले जे बैक्टीरिया जो अच्छी रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया रो जे कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दउची अगेंस्ट गोटे भाइरस बा फेज रे अटैक करू तबे आम देखिबा सेही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केमिति आम पई यूजफुल होउची सो से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोटा को आम यूज कर बायोटेक्नोलॉजी रे टू कट द डिजायर डीएनए और टारगेट डीएनए सो ताको प्रथम करी हमर जने साइंटिस्ट आर्बर्ट प्रथम ताको आइसोलेट करथिले सो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया टू बी सक्सेसफुली यूज्ड इन recombinant DNA technology the BAM2 sorry HIN2 is the bacteria which is successfully isolated and used in restriction endonuclease recombinant DNA technology for the first time. So for the discovery of isolation and discovery and characterization of restriction endonuclease there are three scientists Arbor, Smith and Nathans. They are credited and they are awarded Nobel Prize for the discovery, characterization and isolation of restriction endonuclease so that ये जो प्रथम करी से जो आरंभ कले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एवं ताको यूज कले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे दैट विल बी ए ग्रेट बून टू द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जहाँद्वारा कि आम बहुत गुड़ाए कम तापर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड गोटे फुल स्पीड रे बढ़ी चलला नुआ नुआ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आरंभ हो चलला तब आम देखा से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तार कैरेक्टरिस्टिक नेचर केमी नेमिंग दिया फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को केमी ना दिया सो आम गोटे भेरी कमन दुईटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विषय लिखाई गोटे HIN2 जोटा फर्स्ट आइसोलेटेड होता एंड ECO-R1 जोटा पॉपुलरली एंड वाइडली यूज्ड in different recombinant DNA technology, different genetical engineering technological. So ECO-R1 आमे एटा को नौची ताको नेमिंग देवा केमती ना दिया हिची ताको जानिबा पाए. सो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तार ना को आउथर तुम देखिनियो भल भाव देखिनियो. सो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आमे ना केमती दउचे तार तीनटा वर्ड अछि गोटे HIN-D2. ये तीनटा वर्ड रो प्रथम जो वर्ड हम अंडरलाइन करछि HIN, दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जार जेनस नेम और स्पेसीस नेम को मैं लिखि देछि अलग अलग करी. सो ECO-R1 तार नेमिंग टा को मैं एक्सप्लेन करछि. E स्टैंड्स फॉर एस्चेरिचिया, CO
Co stands for coli with the species name, the genus name, and R stands for RY13. It is the strain. Bacteria manakar so different strain thae. Alga strain thae. So gote strain of bacteria, ଆଉ gote strain ଠାରୁ ଅଲଗା. So सेमती ये जो बैक्टीरिया E को R1 तार स्ट्रेन टा होची RY13 सेटा कोटी मेंशन कराई छि. And 1 जो रोमन number लिखाई छि रोमन numeral 1 I means 1. So that means it is the first enzyme that is isolated from that bacteria. से बैक्टीरिया रो जो एंजाइम से बैक्टीरिया से स्ट्रेन रो जो एंजाइम प्रथम के आइसोलेट होई छि सेटा होछि हितमे दै छि फर्स्ट रोमन 1 लिखाई छि हितमे I लिखाई छि. So सेमती का आमे देखबा हीन 2 तार मध्ये नेमिंग सेमती होइछि. हीन मीन्स हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी तार स्ट्रेन होछि D and 2 means it's the second bacteria. So second enzyme. First enzyme may be not suitable for recombinant DNA technology, but second enzyme which are successful and which are used as the first fast restriction enzyme isolated and used successfully used in recombinant DNA technology. So आमे देखिबा जे ए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तार कोन सो फीचर अछि कोन सो साइट्स अछि. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस गोटे पर्टिकुलर साइट रे से कट करे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा तीन प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोटा कि बैक्टीरिया टू आइसोलेट हुए ताको हम नाम देइछो टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3. सो हमें टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पर्टिकुलरली यूज करछु रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी रे. तार किछिटा सुइटेबिलिटी अछि बिकॉज़ टाइप 1 और टाइप 3 तांकर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस मीन्स जो ए टी जी सी सब लगी तार गोटे सीक्वेंस से पर्टिकुलर जीन रो सीक्वेंस को से माने रिकॉग्नाइज करंती. किंतु टाइप 1 और 3 से पर्टिकुलर सीक्वेंस तांकर स्पेसिफिक न थाए सेति पे हम ताको सुइटेबली यूज करि पारु नाहु. किंतु टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाको कि हमें सुइटेबली यूज करछु बिकॉज़ इट हैज ए पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट साइट which is useful to use it successfully in the recombinant DNA technology. Okay, आमे बाकी तो नेक्स्ट क्लास देखिबा. Thank you.